Hello students, in previous video we have completed the revision of unit 11, that is perimeter. So we have learned that the length of the boundary of a closed figure is called its perimeter. And now let us start the revision of the unit 12, that is area. So what is an area? The measure of the surface enclosed by a closed figure is called area. So जो closed figure है उसने कितना surface को enclose किया है उसे हम बोलते हैं area, right? Suppose this is a triangle, and if we talk about the perimeter, so perimeter is the length of the boundary. तो सिर्फ जो हम boundary साइड से जो बाउंड्री है उसकी हम लेंथ की अगर बात करते हैं, सो दैट इज इट्स पेरीमीटर. टोटल जो बाउंड्री की लेंथ है दैट इज द पेरीमीटर, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट द एरिया, सो एरिया क्या हो गया? जो ये येलो कलर का जो पोर्शन है, जितना सरफेस इस ट्राइंगल ने एनक्लोज किया हुआ है, अंदर जो है जितना सरफेस है, दैट इज its area, right? So the measure of surface enclosed by a closed figure, ये कैसी फिगर है? closed figure है, और इसने कितना जो surface है उसे enclose किया है, that is area, that is called area, right? So what is the best unit to for measuring the area that we have learned is square. So a square is the best unit for measuring the area. So area को measure करने के लिए हमारे लिए जो best unit होती है वो क्या होती है? Square units that we have learned, and these are the two very important things. And whenever we have to find the area, हम उसके जो आंसर हमारा आता है, एरिया आता है, उसमें हम क्या यूनिट लगाते हैं? Square units. And here is worksheet number 2, in which what we have to do, we have to find out the area of the figures in terms of unit area. So हम क्या करते हैं इसमें? number of squares count करते हैं and then we write the area. So 4 square units, right? यहाँ पर भी हमने काउंट किया 5 squares. Similarly ये हम काउंट करते हैं तो उससे हमें फिगर का एरिया जो है, यूनिट एरिया, हमें पता लग जाता है in terms of squares. यहाँ पर हम देखेंगे इस केस में हमारे पास 4 स्क्वायर्स तो हमें डायरेक्टली सीधे दिख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दीज 2? ये तो क्या है? हाफ्स हैं स्क्वायर्स के. अगर इन 2 हाफ्स को मैं जोड़ता हूं तो इट बिकम्स अ स्क्वायर. सो इन दिस वे 4 स्क्वायर्स ये हो गए, और इन हाफ एंड हाफ को जोड़ा तो ये 1 मोर स्क्वायर. सो 4 + 1 इज 5 स्क्वायर्स. सो एरिया इज 5 स्क्वायर्स. एंड द यूनिट्स ऑफ एरिया, इट डिपेंड्स कि आपका जो लेंथ है, आपकी साइड्स की जो लेंथ है वो कौन सी यूनिट्स में गिवन है. अगर आपके जो लेंथ है एंड ब्रेड्थ या जो भी है साइड्स, वो अगर आपके सेंटीमीटर में है तो हमारा एरिया आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अगर मीटर में है हमारी लेंथ फिगर की तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर्स में उसका एरिया आएगा. एंड इफ इट इज इन मिलीमीटर देन द यूनिट यूज्ड टू मेजर एरिया is square millimeter. So square units हम use करते हैं. And now area of a rectangle and a square. So square और rectangle का area find करने के लिए we have formulae, because in this class we have only 2 areas of 2 figures, closed figures, that is square and rectangle. So area of a rectangle is equal to length multiplied by breadth, and area of a square is equal to side multiplied by side. So area find करने के लिए हमें ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, एंड टोटल हमारे पास फॉर्मूलेज जो हैं वो पेरीमीटर्स के हैं, एरिया के हैं, एंड लास्ट में वॉल्यूम के भी हैं. सो वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूले, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसका है और किस में कौन सी यूनिट्स यूज होनी है.
right? So we have two formulas, and here is worksheet number 3. Fill in the blanks. The best unit for measuring area is square. So एरिया को मेजर करने के लिए बेस्ट यूनिट क्या है हमारी? स्क्वायर. एंड मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया. सो क्लोज फिगर कितना सरफेस को एनक्लोज कर रही है, उसको जो हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया. एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो यू मस्ट नो द फॉर्मूले, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय breadth. And the area of a square is equal to side multiplied by side, and the area of a square having one side equal to 1 centimeter. So here we have discussed this कि अगर कोई स्क्वायर है और उसकी साइड्स अगर 1 सेंटीमीटर है, so what will be its area? So you know the area of a square, side multiplied by side. So side is 1 centimeter multiplied by 1 centimeter, that is 1 ones are 1. And what will be the unit? Because centimeters में है हमारी length, so the units will be square centimeter, right? So by applying these formulae, we can easily find the area of a square and a rectangle. So let us do some questions of area. So find the area of a rectangle whose dimensions are. So here we have to find out the area. So let us take one example. When the length is given and breadth is also given. Length is suppose 8 centimeter and your breadth is 3 centimeter, right? Here the length and breadth is given, and what we have to find? We have to find out the area of the rectangle. Area of the rectangle whose length and breadth are given. So we know the formula, that is length multiplied by breadth. So length multiplied by breadth is the formula to find the area of a rectangle. So what we have to do? We have to put the values of length and breadth which are given. So what is the value of length? That is 8 centimeter. So length की जगह हम क्या लिख देंगे? 8 centimeter multiplied by breadth is 3 centimeter. Multiplied 8 3s are 24. And now about the units. So what will be the units? So here and the question में जो length and breadth given है वो कौन सी units में है? सेंटीमीटर में. So area हमारा किस में होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. बिकॉज एरिया जब भी हम निकालते हैं तो उसके जो यूनिट्स होती है वो स्क्वायर यूनिट्स होती है, राइट? एंड सपोज लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज लेंथ इज 10 centimeter and breadth is equal to 7 centimeter. Now what will be the area of a rectangle? So area, you know, length multiplied by breadth. Put the values. Length is 10 centimeter multiplied by breadth is 7 centimeter. So 10 sevens are 70 and units are centimeter. So we'll write square centimeter. Right? अगर यहाँ पर मीटर में होता 10 मीटर एंड breadth 7 मीटर, then हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा आता 70 square meter. And similarly, find the area of a square. Now here, you know that in square, the length of all the sides are equal. स्क्वायर के केस में सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. सपोज side is given 12 centimeter, right? And we have to find the area of the square. Area of the square. So what is the formula? Here formula is same in both the cases, length multiplied by breadth, but in case of square, length and breadth are same, so that is side multiplied by side.
So 12 centimeter multiplied by 12 centimeter. So 12 12 is 144 square centimeter. So in this way, we can find out the area of rectangle and square, right? Now don't get confused in the area and perimeter. So इनके जो फॉर्मूले हैं पेरीमीटर और एरिया के, ये आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में, और क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट? वी विल डू मोर प्रैक्टिस अबाउट इट सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss more about it. Thank you.